बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के इस शुमारे में आज हम जानेंगे कि आइलेट्स में आप अपना स्कोर कैसा अच्छा बना सकते हैं। हमारे साथ जो इस वक्त गेस्ट शामिल है, जो ये प्रेजेंटेशन देंगे और उनसे आप क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, उनका सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे जो गेस्ट है इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अबरार अंसारी। बेसिकली ये कोलकाता से हैं, कोलकाता इंडिया से हैं, और किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम से इंग्लिश इंस्टीट्यूट में ये इंग्लिश पढ़ाते हैं। और ये एक्सपर्ट है आइलेट्स में। उनका ये आइलेट्स के कोर्सेज होते हैं। और काफ़ी टाइम से मैंने इनको गुजारिश की थी कि हमारे जो बच्चे हैं अक्सर व बेशतर जब वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, तो उनको आइलेट्स में प्रॉब्लम आती है, या तो उनको पता नहीं होता ये क्या है, अगर पता भी होता हो तो गाइडेंस की कमी है। तो आज हमने कोशिश की कि एक तो इस वेबिनार को हम शामिल करें जिसमें हम पार्टिसिपेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, ताकि अगर कोई क्वेश्चन एंड आंसर है तो वो एक्सपर्ट से डायरेक्टली इसके बारे में पूछे। डॉक्टर अब्रार ने अभी अपनी एक मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया, सिंप्लीफाइड आइलेट्स के नाम से, जिसमें वो प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। और प्रोग्राम के आखिर में उसकी लिंक हम शेयर भी करेंगे। ये वीडियो जब अपलोड होगा, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उस लिंक को देंगे, ताकि आप डायरेक्टली ज्वाइन करके डॉक्टर साहब से ज़्यादा फ़ायदा उठा लें। ये जो प्रोग्राम है असल में है तो इंग्लिश का, बट मैंने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर अबरार से कि इसको आप बाइलिंगुअल बनाएं। ज़्यादातर हमारे जो ऑडियंस है वो उर्दू जानने वाले हैं, सो विल ट्राई टू मेक इट बाइलिंगुअल बोथ इंग्लिश एज वेल एज उर्दू, ताकि हमारा मकसद पूरा हो जाए। वैसे भी आप बहुत सारे आइलेट्स के जो लेक्चर्स होंगे वो इंग्लिश में तो पाते ही हैं। जिस चीज़ की कमी है वो है कि हमारी ज़बान में हमें पता चले कि आइलेट्स होता क्या है, इसका स्कोर आप कैसे बेहतर बना सकते हैं और कब ये किस तरह किया जाता है। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं डायरेक्टली डॉक्टर मोहम्मद अबरार अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें। डॉक्टर साहब, मैं होस्ट हूं, तो जब भी आपको स्लाइड आगे ले जाना हो तो मुझे बताइएगा, मैं स्लाइड को आपके लिए यानी उसको फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, माइक आपके लिए, प्लीज स्टार्ट। शुक्रिया खूबसूरत तारुफ करने के लिए, and thank you very much for your beautiful introduction. I welcome you all to this wonderful webinar on IELTS. I'm absolutely delighted to be sharing with you important information about IELTS, especially the format of IELTS, and what are the strategies that you can stick to in order to get a top score. So, इस वेबिनार का मकसद है आपको आइल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए, ताकि आप आइल्स के सारी चीज़ों से फेमिलियर हो जाएं और फिर आपको स्कोरिंग अच्छा करने में मदद करे। Now, let's understand what is IELTS about. What is IELTS all about? IELTS is International English Language Testing System. And this test is conducted in order to assess students' ability to read, speak, listen, and write in English, especially for non-native speakers of English. IELTS का मकसद है आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल को जानने का, कि आपकी अंग्रेजी की जो रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग वगैरह है, उसमें आपकी काबिलियत कितनी है, आपकी कितनी अच्छी वो सारे स्किल्स हैं। There are three bodies that conduct this IELTS. They are authorized to do so, and they are British Council, IDP Australia, and Cambridge Assessment. Can we have the next slide, please? Yeah, as you can see here, the three bodies that are authorized to conduct this test: British Council, International Development Program, that is IDP Australia, and Cambridge English.
Now, let's have a general idea about IELTS. What kind of test are they? And what are the skills which are actually tested in this exam? Like, there are two types of test, academic or general. As you know, IELTS is conducted for various reasons. Academic is usually conducted for higher studies, students who want to go and study abroad. And general IELTS is conducted for those students, for those people who want to immigrate to English-speaking country such as America, Australia, Canada, New Zealand, and so on. यानी एकेडमिक आइल्स का मुराद है वो लोग जो हायर स्टडीज करना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में। जनरल आइल्स उनके लिए है जो किसी दूसरे ममालिक में जाके बसना चाहते हैं। There are 4 skills which are to be tested in this test, and they are listening, reading, speaking, and writing. इनमें 4 skills टेस्ट किए जाते हैं। अब वो है listening, reading, speaking, और writing. Now, let's have a look at bands vis-a-vis skills. What are the skills that are tested and at what level in order to get a particular band score? अगर आपका स्कोर बैंड 9 है, इसका मतलब आप एक्सपर्ट यूजर है इस लैंग्वेज के। बैंड 8 है यानी वेरी गुड यूजर है। बैंड 7 यानी कि आप अंग्रेजी का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। 6 है यानी कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं बोथ रिटन और स्पोकन में। फिर उसी तरह से नीचे वाले सारे बैंड है। जितनी एबिलिटी आपकी कम है वो बैंड नीचे लो होता जाएगा, जितनी इसमें एबिलिटी अच्छी है वो ऊपर स्कोर बैंड स्कोर जाएगा। So there are different band scores depending upon your proficiency in the language. The higher your ability is, the higher your band score that you get. Next slide, please. And here is the format of IELTS, as you can see. So the first skill that you take in IELTS exam is listening. So पहला जो टेस्ट होता है IELTS में वो listening का है, and you get about 30 minutes for it. इसमें आपको 30 minutes दिए जाएंगे, and you get about 10 minutes to transfer your answer from question booklet to the answer sheet. यानी आपको 10 मिनट ज़ायद दिए जाएंगे ताकि आप अपने जवाबात को आंसर शीट पे ट्रांसफर कर पाएं। In total, there would be 40 questions and 4 sections. इसमें 40 सवालात पूछे जाते हैं लिसनिंग में, और ये 4 किस्मों में बटा होता है। Let's have a look at different types of questions that are asked in the listening test. And they are fill in the blanks, label a diagram, multiple choice questions, map, and matching activity, etc. यानी इसमें अलग-अलग किस्म के सवालात होते हैं। कभी आपको खाली जगहों में एक वर्ड भरना होगा, कभी उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको मुंतखब करना होगा। And similarly, when you take the writing test, which is the second one, you'll be getting about 60 minutes. You have to do it in 60 minutes. And again, like listening, there are 40 questions. And it's divided into 3 long passages when you are taking an academic IELTS. इसमें 60 minutes दिए जाएंगे, और लिसनिंग की तरह ही इसमें 40 के लगभग सवालात होंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। एकेडमिक आइल्स का नेचर थोड़ा अलग होता है, डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है, ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। और जनरल जो है वो उन लोगों के लिए है जो दूसरे कंट्री में इमिग्रेट करना चाहते हैं। इसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी कम होती है, और इसमें 5 पैसेज। Let's have a look at different types of questions in the reading. You will have to do fill in the blanks, true, false,
yes, no, not given, matching activity, choose the correct headings. यानी कि इसमें भी मुख्तलिफ तरह के सवालात होते हैं जो अलग अलग स्किल्स और एबिलिटीज को चेक करते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स, मैप, मैचिंग एक्टिविटी वगैरह. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? Let's have a look at writing, both academic and general. Uh, there are two types of tests, as I told you earlier, academic and general. So we're going to have a look at writing of academic and writing of general IELTS as well. Now let's have a look at writing academic first. In task 1, you will get about 20 minutes, and you have to write in about 150 words. So academic IELTS में आपके टास्क 1 में 20 मिनट का टाइम लेंथ होता है और 150 वर्ड्स के लगभग आपको आंसर्स लिखने होंगे. और इसमें सवाल जो है ये ग्राफ होगा, डायग्राम होगा, ये चार्ट होगा, यानी कि इंफॉर्मेशन इसमें दिया होगा, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके आपको लिखना होगा. In academic IELTS, especially in writing, the nature of writing is a bit different. You'll have a diagram with data and information. You have to interpret that data, and you have to present it in the format of task 1. Like you have to give introduction, then overview, and then you have to write the details of the information, and you have to present it. You don't have to conclude it. IELTS academic writing 2 में 40 मिनट्स का टाइम होगा और ये 150 वर्ड्स का होगा. और इसमें एसेज के टॉपिक होंगे जिसको आपको लिखना होगा. ऐसे टाइप ये हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ओपिनियन, कॉज इफेक्ट्स एंड एटसेट्रा. इन एकेडमिक IELTS task 2, you will get about 40 minutes and you have to write in about 250 words on the topic given. And there could be different types of essay, like problem solution essay, advantage disadvantage essay, opinion essay, cause and effect essay. So there will be just one topic, and it could be any type. Nobody knows. Now let's have a look at IELTS writing general. In task 1, you have to write a letter. It could be formal, informal, sometimes it could be semi-formal. And you get about 20 minutes, and you have to write in 150 words. IELTS general में टास्क 1 में आपके टाइम लेंथ जो है 20 मिनट्स का होगा और आपको इसको 150 वर्ड्स में लिखना होगा. आप याद रखें कि 150 वर्ड से ज़ायद हो लेकिन कम ना हो. अगर कम होगा तो आपके स्कोर कम आ सकते हैं. और इसमें फॉर्मल लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग एंड सेमी फॉर्मल वगैरह हो सकता है. In IELTS task 2 general, you will have about 40 minutes to do this, and you have to write it in 250 minutes. Again, you have to attend a long essay. It could be, of different types: problem solution, advantage, disadvantage, cause and effect. So task 2 is almost the same in both academic and general. इसमें वही आपको ऐसे लिखना होगा 250 words. Now let's have a look at the format of speaking. In speaking, you will have about 15 to 20 minutes, about 15 minutes, yeah. And there will be 3 sections. In the first section, you will be asked short answer questions. They will be asking you short questions, such as what's your name, what do you do, where do you come from, and you need to answer. Speaking में 15 minutes का टाइम दिया जाएगा
और इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले पहले सेक्शन की बात करते हैं, जिसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए आसान से सवालात पूछे जाते हैं कि आपका नाम क्या है? आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? आप स्टूडेंट हैं या सेक्शन 2 ऑफ IELTS speaking. In section 2, you'll be given a cue card on which they will question, and you have to prepare that question for 1 minute, and you have to speak for 2 minutes. Uh, and the question will also have prompts, like, for example, uh, what is your prized possession? What is it about? Who has given you? And when did you get it? Or maybe why is it so special to you? You need to explain. यानी कि सेक्शन 2 में आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा जिसके ऊपर सवाल लिखा होगा। उस सवाल के प्रॉम्प्ट्स होंगे कि आप वो चीज़ क्या है जिसको आपको बहुत आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। तो उस चीज़ का नाम क्या है? उसे किसने दिया? और आप इसको इतना पसंद क्यों करते हैं? और वो कब दिया गया? इस तरह की चीज़ें आपको पूछी जाएगी। In section 3, you'll have follow-up questions, cross-questioning. So whatever questions were asked in the section 2, now you will have something related to this, but you have to give an extended answer. You have to speak for about, 7 to 8 sentences for each question that is asked. And most of the questions that are asked in section 3 are abstract in nature. The question could be something like, if you, what would you do? Another things that you would do in society to transform it. Let's have a look at the last and final slide. Now, what are things that you should be doing to improve your score, to get a better score? Like in listening, you have to improve your micro skills. And what are they? Like prediction, paraphrasing, signposting. Prediction means, so when you read the question, you need to think of, the kind of answers that you can get. And that helps you. Like, for example, so if you read an adjective, you can make a guess that the next would be noun. Because in English, we use a pattern of adjective plus adverb. In paraphrasing, so if you read a question, you should think of other words that you can say the same question, because you can find answers similar to it. Signposting also helps you, like first, second, third point is that. So as soon as he says second point, you are ready. Okay, now he's going to talk about in detail about the second point related to the main idea. And to improve your listening, you should listen to BBC English, TED Talks, 6-minute English, because you're exposed to authentic English. You're exposed, you're exposed to how native speakers speak in the natural conversation. Now, listening को improve करने के लिए आपको prediction जैसे चीजों को improve करनी होगी, यानी कि आपने एक सवाल पढ़ा तो इसका आंसर क्या हो सकता है, guessing. Paraphrase जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा तो उसका दूसरा वर्ड में ये किस तरह से कहा जा सकता है, वो आपको आंसर ढूंढने में मदद करेगा. साइन पोस्टिंग जैसे एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया, फिर जैसे सेकेंडली, थर्डली, अनदर पॉइंट इज दैट. तो इन सब चीजों से आपको पता होता है कि स्पीकर आगे क्या बोलने वाला है, वो आगे क्या वजाहत करने वाला है. नाउ और इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आपको BBC इंग्लिश, टेड टॉक, 6-मिनट इंग्लिश, शुरू में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप अगर यूज्ड टू हो गए, आदी हो गए, तो आप समझना शुरू करेंगे. और जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको नोट डाउन करें, उसका मीनिंग देखें. इस तरह से आप लिसनिंग इम्प्रूव कर सकते. रीडिंग. In reading, again, you need to improve some of the micro skills that help you improve your reading skill, like paraphrasing.
Like, for example, if you are not able to recall a particular word, for example, living room. Now, you can describe it. For example, it's a room where most of us gather to watch TV. It's a room where we spend a lot of time sitting on sofa, having conversation. So the person will be able to guess, okay, you're talking about a living room. So this is what paraphrasing is all about. So saying the same thing using different words, using different structure. Skimming. So पैराफ्रेजिंग कहते हैं अगर कोई चीज आपको नहीं आ रही तो उसी चीज को आप दूसरे अल्फाज के सहारे से कैसे कह सकते हैं. Now let's have a look at a skimming. So if you read a passage, you should be able to understand what is this passage about. और इसी को स्किमिंग कहते हैं. जैसे एक पैसेज आपने पढ़ा, ये पैसेज किस चीज के बारे में है? फूड के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में. अगर आपके पास ये काबिलियत है तो इसको स्किमिंग कहते हैं रीडिंग में. Scanning. So if you read a paragraph and there are dates or names or other important facts, and if you're able to locate that, it means your scanning ability is good, and it's very much required in IELTS. You need to do scanning in order to find answers quickly. यानी कि dates या नेम या कोई खास चीज के बारे में अगर जिक्र हो, फौरन उसको ढूंढना हो, तो इस एबिलिटी को स्कैनिंग कहते हैं. यानी कि जल्दी से कोई फैक्ट्स को ढूंढना पैसेज में से. Inferencing. Dr. Abrar, sorry to say, you have only 3 minutes to conclude the talk. 3 minutes. All right. Now, inferencing is also important. Like, if you read something, what is the meaning beyond the line? So you need to get to know the overall meaning of something. यानी कि आप पढ़ करके अंदाजा लगाइए किस चीज के बारे में, वो इन्फ्लुएंसिंग है. Let's have a look at writing. In writing, there are important things that you need to take into consideration. For example, cohesion and coherence. Like when you write something, you have to use cohesive devices. For example, linkers, first, second, third, moreover, furthermore. These things, when you use linkers, you are able to express yourself in a logical manner, one after another. यानी कि लिंकर्स का इस्तेमाल करने से ये होता है कि आपकी राइटिंग जो है वो अपनी बातों को आसानी से कह पाते हैं और लॉजिकली समझा पाते हैं. In writing, you have to use range of sentences. Like you should be using simple sentences, compound sentences, complex sentences, in order to give an impression to the examiner that you are comfortable with, different types of sentences and structure in English language. यानी कि जब आप लिख रहे हो तो आपके पास अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हो, सिंपल सेंटेंसेस भी इस्तेमाल करें, कॉम्प्लेक्स भी, कंपाउंड में, ताकि आप ये बता सकें कि आपके राइटिंग में मास्टरी है और अलग अलग सेंटेंसेस को बखूबी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. And of course, grammar is important. If you say something which has mistakes, you lose your credibility as a writer. So whatever you write, you have to write it accurately. It should be grammatically last minute, Dr. Abrar, last minute. Okay. और ज़्यादा से ज़्यादा adjectives और adverbs use करें ताकि आपका जो writing हो वो improve. You should be using more adjectives and adverbs in order to add flavor to your writing. In speaking, you have to use informal English because this is not academic. This is informal. So you should be using informal English, the kind of English that we use in our daily conversation. You have to use short forms. You should be using idioms and phrasal verbs because native speakers make use of a lot of idioms and phrasal verbs when they interact with others. And Dr. also, Abrar, thank you very much. Thank you very much. ये सेशन जो है अभी एंड होगा. दूसरा इसके बाद शुरू होगा. आप इसी लिंक पे फिर से आ जाइएगा क्योंकि हमारे पास कुछ सेकंड रह गए हैं इस प्रोग्राम को एंड करने के लिए. आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम क्वेश्चन आंसर लें तो आप सेकंड फेज पे आप इसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे जो लिंक आपके पास अभी जूम लिंक है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्रार. It was a nice. Please join again to shoot your questions. Yeah, you can ask any questions. Sure. Thank you very much, Dr. Abrar. So we are ending this and we are opening the other link. So you